और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामान ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें, अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, या वो फर्द वाहिद हावी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस सवाल का जवाब दीजिए। If I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. फिर आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ठहर जाइए ना, ये मफरूज़ों में ना जाइए। हम देखिए, मैं जो बात करता हूँ मैं मफरूज़ों की कम करता हूँ, हकीकत की बात जात कर। पिछली तारीख पे हमने मौजूद थे, रिको डिक का केस का बताया, ठीक है। रिको डिक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, ठीक है। कोई दरवाज़ा नहीं था उसको खोलने का सिवाय एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक स्ट्रेच जुरिस्डिक्शन आप समझ लें उसको, वहाँ इस्तेमाल किया गया। इस तरह का केस अब आप पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, और ये ज़फ़र अली शाह की बात करें। ये इन्होंने तो आप किधर हैं, आप तो इधर बारीकियों में जा रहे हैं। उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना, ये पाकिस्तान की तारीख को आपके नज़रअंदाज कर दें। हमारे एक बहुत फ़लसफ़ाई बहस में पड़ जाते हैं, हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें देखिए पार्लियामान की कदर करना चाहिए। अगर कोई कानून, ये मेरी ज़ाती राय आप समझ लें, है तो वो आप उसको दिखाइए, ये लोगों का इसमें नुकसान है, ये आइन के शिक के बरक्स है। मेरे दोस्त ने बार बार फरमा रहे हैं आप प्रोसीजरल बात है तो कोई कर नहीं रहा है। आप लोग अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अटैक भी नहीं समझ आया कि आपको पूरा पसंद नहीं है, उसकी कोई शिकें नहीं पसंद हैं, कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि जो आप 14 दिन में फैसले कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सदर, ठीक है, ये मौक़िफ़ पहले कहते थे कि जी फलां डॉक्ट्रिन है, केस लगता ही नहीं है, ठीक है। खुल के बात कीजिए ना, या तो ऊपर पीछे हट जाएं। वो कहते थे ये एक डॉक्ट्रिन है, मैं साहब का नाम नहीं लूँगा, केस ही नहीं लगाओ। ये आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये क्या हल्फ के मुताबिक है? जब आप ये सारी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, फिर आप ये भी देखिए कि दुनिया में हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है। हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं फ़र्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, और फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाएं या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूँगा, आपस में नहीं करूँगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फ़िक्र पड़ रही कि हम कैसे फैसला करें आपस में, हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आइनी मसले को। एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आइनी मसाइल को, ठीक है। इनका एक तर्ज कार है, अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया। आप कर सकते हैं तो अगर 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं। तो देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया, अखबार की खतीम पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनज़र रखिए। और फिर आप ज़रा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामान को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फ़ायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में। तो आप ज़रा इतना नैरो विजन ना रखिए, ज़रा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आइन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फ़ायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को आप छोड़ दीजिए। This is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A या इंसाफ तक रसाई, यानी वो आम शहरी के लिए बिल्कुल ये मान नहीं कर सकती. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first
address, I will come to your Lordship's question. Your Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर रहे हैं. No, आपने का पिछले judgments की बात है. मैं जो आपको submit कर रहा हूँ, वो एक मैं सिर्फ सर, जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. Speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jilani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3. Because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what the argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, Section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184.3, and therefore perhaps on that very short ground is perhaps unconstitutional. Absolutely. And there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Counsel. I'm sorry. No, answer the question. Please. Learned Counsel, on the same argument,
the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still